Hello everyone, welcome to Math Vibes. Today in this video, we are going to discuss the solutions of exercise 3.3 in which we have to draw bar graph or double bar graph and we have to read the bar graph or double bar graph also of class 7 maths. Okay, the chapter is data handling. So let us first discuss the very first question. And those who are new to our channel, don't forget to click on the subscribe button. So the first question says, use a bar graph to answer the following questions. First is, which is the most popular pet? So if you observe the graph here carefully, then the highest bar over here is at cats. Okay, so answer is cats are the most popular pet among the students. So let's briefly discuss what is bar graph. Bar graph is in which we draw these bars, rectangular shape, okay, of uniform width, means their size will be same. Uniform means same. So it will have uniform width and the gap between them is also equal. You can see the gaps, you can see the red dot moving over here. So the gaps between them should be equal. Gaps also should be uniform and these bars also should be of uniform size. We can write these headings here also or we can write it in between also. It is your wish. Okay. The other things you already know that this is horizontal axis is x-axis and the vertical axis is called y-axis. All right, and when we have to draw a bar graph, we have to define x-axis and y-axis also, that what x is representing and what y is representing. So now first and second question is about reading the bar graph, and we will start learning how to draw the bar graph in the third question. So the second question here is, how many students have dog as a pet? So we will see the bar representing dogs. It is ending at 8. That means only 8 students have dog as a pet animal, whereas 10 students have cats as a pet animal. Okay, let's move on to second question. So read the bar graph which shows the number of books sold by a bookstore during 5 consecutive years, and we have to answer the following question. So about how many books were sold in 1989, 1990, 91, 92 and 1993. But we are asked only 3 years. So number of books sold in the year 1989. See here the lines, every line on the graph is not defined clearly. Okay, so we can make a rough estimate that if one unit is representing 100 books, then from 100 to 120 this must be around 180. Now its answer can be, as its answer is vague, so we can write it answer as 180 or 185 or around 189. That also will be correct because the answer is not clear over here. Okay, each and every line is not written, it is just drawn like that. Okay, so we cannot count the exact number of line that where it is lying so that we can measure it properly. Okay, so its answer can be 180, 182, 183, 185 also. Okay, but not more than these. Okay, or 187, till 187 also it can be correct. Same way, by following the same process, I can say that if I take 1990, then it is more than half of 400, right? And it is near 500, so it will be 490 or 492 or 494. All these answers can be correct. And following the same process in 1992, it is about 295. It is near 300. It is near 300, right? So it will be around 295 or 275 can be okay because it is not very clear in this. Now next, so in which year were about 475 books sold? और 475 बुक्स, अब सी 400 के आसपास देखो कौन सा लाई कर रहा है, और तो कोई उसके आसपास भी नहीं है, एक यही है. ओके, सो इन ईयर 1990 we can say about 475 books were sold and about 225 books. अब 225 means 200 से 300 के बीच में. So between 200 to 300 we have these two graphs.
right? These two graphs we have. So between 200 to 300, now the number given is 225. Now this is near 300, right? ये तो 300 के पास है, ज़्यादा पास है. That means it can't be 225. So 225 will be this. So we will write about 225 books were sold in the year 1992. Third question, in which year were fewer than 250 books sold? 250 से भी कम books कहाँ किस year में बेची हैं? 250 से कम books. That means around this area. तो अभी हमने ऊपर कहा कि 1992 में हमने 225 बेची हैं. That means one answer is 1992 and the other is clearly 1989. Right? Fourth, can you explain how you would estimate the number of books sold in 1989? इसको कैसे देखोगे? See, on y-axis, the line is divided into 10 small parts of 10 books, right? Each. So we can estimate the number of books sold in 1989 about 180. Okay. तो सी आगे हम क्या सीधा लिख रहे थे about 180 books, about 182 books, okay, और about 189 books, right? But यहाँ पे क्वेश्चन था can you explain? तो एक्सप्लेन का मतलब हमें पूरा लिख के बताना पड़ेगा, इंग्लिश में एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि क्यों हमने वो चूज किया और कैसे हम एस्टिमेट कर रहे हैं कि ये जो सारी वैल्यूज है ये अबाउट 180 है. आगे हम सीधा लिख रहे थे बिकॉज क्वेश्चन वो स्ट्रेट अवे दैट इन विच ईयर. अब इन विच ईयर वर फ्यूअर अबाउट हाउ मेनी बुक्स, राइट? पूछा ही नहीं उन्होंने एक्सप्लेन करने के लिए, बट नाउ दे वांटेड एन एक्सप्लेनेशन, सो यू विल राइट इट ओवर हियर. ओके, कि क्यों हम उसको ऐसे ले रहे हैं. सो दैट वाज अबाउट सेकंड क्वेश्चन. मूविंग ऑन टू, so in the third question it is given that number of children in 6 different classes are given below. You have to represent the data on a bar graph. Okay, so here I have drawn the bar graph. You can have a look over here. Whenever we have to draw the bar graph, then there are certain things that we have to keep in mind always whenever we are drawing any bar graph or double bar graph. The first thing is we have to draw the axis. So we will draw x-axis and y-axis properly, and if you don't put an arrow, then your half mark is always deducted. Okay, when you are drawing the axis, draw the arrows and write x and y, which will represent x-axis and y-axis. First step. Second step, you have to define the axis. डिफाइन द एक्सिस का मतलब होता है कि लिख के बताओ कि x एक्सिस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है और y क्या रिप्रेजेंट कर रहा है. X-axis is representing what and y-axis is representing what. Okay, so you have to define the axis. So here say x-axis is representing classes and y is representing number of students. Generally जो चीजें वेरी करती हैं okay numbers में, उनको हम y-axis पे लेते हैं, which are fixed they that we take on x-axis. okay, जैसे यहाँ पे classes हैं वो fix हैं 5 6 7 8 9 10, ठीक है, वो हम वहाँ यहाँ लेंगे. और ये जो उनकी नंबर है, नंबर ऑफ जो नंबर्स होते हैं ओके फ्रीक्वेंसी या नंबर्स, ये हम लेते हैं वाई एक्सिस पे. दिस इज द सेकेंड स्टेप. फर्स्ट इज ड्रॉ द एक्सिस, सेकेंड डिफाइन द एक्सिस, थर्ड राइट डाउन द स्केल. ओके, स्केल मीन्स जो वन यूनिट है, ये जो वन बॉक्स है, ये जो वन बॉक्स है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वन बॉक्स. इट इज रिप्रेजेंटिंग 10 स्टूडेंट्स इन दिस क्वेश्चन. In this particular question, one box is representing 10 students. Okay, so हम फिर उसके बाद ये स्केल लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं जिसका 1 मार्क होता है, यहाँ स्केल लिखते हैं. okay, and then we start drawing it, start plotting the graph. तो फिफ्थ 135. अब हमें बार्स बनानी है ऑफ इक्वल लेंथ. सो बेस्ट इज आप एक एक बॉक्स की बार बनाओ और एक एक बॉक्स बीच में छोड़ो. okay, so 0 10 20 30 and so on, and this is representing number of students. so 135 है तो मतलब 130 और 140 के बीच में ये थोड़ी सी डार्क लाइन एक और होगी, दो डार्क लाइन के बीच में एक हल्की वाली डार्क लाइन होगी, that is representing the fifth line. so you will draw a line over here and you will draw the bar. you can write fifth over here also, you can write it down also. Okay, same goes for 6th, 7th, 8th, 9th and 10th. So here 5th is 135, 6th is 120, 7th is 95, 8th is 100, 9th is 90 and 10th is 80. So that's it. This is the bar graph, right?
So let's move on. If you want to draw it along with the video, you can pause the video and then you can continue to draw. We will continue with the next question. But in the third question also it is continued. The first part was represent the data on a bar graph. Then there are certain questions that we have to answer. First is how would you choose a scale? So कैसे चूज किया आपने स्केल? तो हमने चूज किया कि 1 centimeter is equal to 10 student because the maximum number of students was 135 and the minimum number of students were 80. And they were mostly the multiples of 10 and 5 can be easily drawn. So we have chosen scale on y-axis as 10 students. 1 centimeter is equal to 10 students. Then the next question was which class has the maximum number of children and the minimum. So maximum देखो इसमें कहाँ है 135 fifth, minimum is 80 that is 10th. Next, find the ratio of students of class 6th to the students of class 8th. Ratio निकालना है. Ratio याद है रेशियो कैसे लिखते हैं? So numerator over denominator, right? So number of children in class 8th is 100 and number of children in class 6 is 120. तो ratio class 6 to class 8 मतलब 6th class को ऊपर रखना है और 8th को नीचे. So 120 by 100 will be 6 over 5, that is 6:5. Correct? Let's do the next one now. Fourth question, the performance of a student in first term and second term is given. You have to draw a double bar graph, choosing appropriate scale and answer the following. Now, double bar graph does not mean कि bar graph को दो बार बना दो. Okay, it's not make it 2 times. No, on one graph only you have to plot a double bar graph. Bars should be double in number. See, जैसे twins होते हैं ना, तो ऐसे ही bar graph double वाले. Okay, so again when you have to draw the bar graph, again those points I am repeating. First step, draw the axis, x-axis, y-axis, put arrows over there. Second step, define the axis कि x-axis क्या represent कर रहा है, y क्या represent कर रहा है. Then choose the scale. Okay, अब यहाँ scale में थोड़ा सा कुछ बताने वाला है, तो that I will explain. Then afterward fourth step is plotting. तो first step x-axis, y-axis draw किए. Second step, define किए that our x-axis will be representing subjects and y-axis will be representing marks. Okay, define हो गया. Third is scale. अब देखो यहाँ पे भी 100 से कम है, right? और minimum है 67. तो हम 10 का gap ले रहे हैं because it is very easy to draw if you choose a scale of 10. It's very easy. You don't have to count every time. You know that one line is representing 10. Okay, so here 1 square unit is equal to 10 marks. Okay, you can write 1 unit also, it's okay. So when the new thing is when you have to draw a double bar graph, then obviously you are drawing two graphs. तो कैसे पता चलेगा कि कौन सा बार किसको, sorry, you are drawing two bars. तो कैसे पता चलेगा कि कौन सा बार किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ओके, तो हमें उसको अलग करना पड़ेगा, हमें उसको अलग से डिफाइन करना पड़ेगा. तो हमें ऐसे करते हैं, एक को खाली रहने देते हैं और एक में थोड़ा सा कलर कर लेते हैं. ओके, आप कलर कर सकते हो, आप शेड कर सकते हो, इट इज ऑल योर चॉइस. शेडिंग कर सकते हो, लाइन ड्रॉ कर सकते हो, डॉट्स लगा सकते हो, वट एवर यू वॉन्ट टू डू यू कैन. ओके, पर ज्यादा टाइम मत वेस्ट करना. ओके, सो जस्ट डू दिस. डिफाइन किया, डबल बार ग्राफ में हमें ये जरूरी होता है डिफाइन करना. ओके, ये डिफाइन किया एंड दैट्स इट. स्टार्ट प्लॉटिंग. अब देखो डेटा कैन बी बिग ऑल्सो. ऐसा भी हो सकता है पेज खत्म हो जाए और ये कंप्लीट ही ना हो. सो व्हाट विल यू डू, you will just divide the one bar into two parts. तो हाफ पार्ट में एक फर्स्ट वाला ड्रॉ कर लो, नेक्स्ट वाले पार्ट में सेकेंड वाला ड्रॉ कर लो. ओके, तो इंग्लिश का जैसे 67 और 70 है, तो यहाँ पे हाफ वाले बार में 67 ड्रॉ कर लिया, 60 के आगे 7th लाइन, और नेक्स्ट वाले में 70 है तो 70 ड्रॉ कर लिया. Next 72, 65, 88, 95, 81, 85, 73 and 75. Plotting, you know, plotting is easy, that you can do. But remember, bar graph हो या double bar graph हो, equal gaps. अगर एक हाफ में बना रहे हो तो सारे हाफ में बनाओगे. गैप एक बॉक्स का छोड़ रहे हो तो हर जगह एक एक बॉक्स का गैप ही छूटेगा. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन.
Consider this data collected from survey of a colony and draw a double bar graph choosing an appropriate scale. What do you infer from the bar graph? चाहे लिखा हो चाहे ना लिखा हो, scale आपको लिखना ही लिखना है. These things are by default. Mark the x's, define the x's, write the scale and then plot. Okay, so by following the same process, I have done the plotting of this question also. You can have a look. Here one unit represent 100 residents, and this blank box is for watching people and the other one is for participating people. The question was about the favorite sport, and favorite sport है कौन कौन देखता है और कौन कौन participate भी करता है, उसका बार ग्राफ बनाना है. So by following the same process I have plotted it. You can pause the video and you can have a look and then you can plot it side by side. Then after this, after plotting, यहाँ पे भी gap was minimum number is 105 and the maximum was 1240. तो हमने 100 का gap ले लिया because that was easier to draw. Alright, moving on. Now, of the fifth question only, there were certain questions. First was to draw the graph, to plot the graph, and then the next question is which sport is most popular. And iske first part ka answer I have written on the graph itself, that what do you infer from that graph. Okay, so second is which sport is most popular? Obviously cricket. And which is या मुझे एक लाइन याद आ गई है ना कि क्रिकेट के लिए तो बोलते हैं ना इंडिया में यू ब्लीड ब्लू. Okay, so I have chosen the font also blue, just unintentionally. Okay, so all right, coming back, which is more preferred, watching or participating in sports? Watching the sports is more preferred by the people. They watch in offices, they watch in anywhere, wherever they are going shopping or everywhere. If the match is there, you will see people watching cricket everywhere on phones, mobiles, on screens, everywhere. They that same thing, bleed blue. Right. Come on, next question. Let's not get ourselves distracted. Question number 6 of exercise 3.3. This is the last question of the exercise. A little tricky, but you will be able to do it. It says that take the data giving the minimum and maximum temperature of various cities given in the beginning of the chapter, and it is given on page 57 of the book. You can, if you want to see the table in the book, then it is given on page 57. I have just written the table on the side so that it becomes easy for you. तो पेज 57 पे बेसिकली ये वाला टेबल दिया हुआ है जो मैंने यहाँ पे लिख दिया है. 57 पेज पे भी उन्होंने कुछ एक्सप्लेन किया था और इसका क्वेश्चन उन्होंने एक्सरसाइज में भी डाला है. ओके, तो फर्स्ट तो वही है, प्लॉट द डबल बार ग्राफ फ्रॉम दिस डेटा ओनली. तो हमने ये वाला डेटा कंसिडर किया, सारे 100 से कम थे. तो फर्स्ट अगेन वी हैव ड्रॉन द एक्सेस, देन वी हैव डिफाइंड द एक्सेस. एक्स एक्सेस कर रहा है सिटीज को रिप्रेजेंट और वाई कर रहा है टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस को रिप्रेजेंट. थर्ड हमने चूज किया स्केल जो है 1 स्क्वायर यूनिट इज इक्वल टू 10 डिग्री सेल्सियस. Then blank will represent the minimum temperature and dash this, that filled box will represent the maximum temperature. कुछ भी ले सकते हैं, मैंने बस यहाँ पे आपको दोनों पता होनी चाहिए कि ये नहीं है हमेशा पहले खाली लेना है, ऐसा कुछ नहीं है, आपकी मर्जी है, आप जो मर्जी ले सकते हो. ओके, just your choice. So yes, coming back, scale define किया and then you have to plot. So Ahmedabad is 38 degree Celsius and 29 degree Celsius. Written 38 and 29. बेस्ट है कि आप स्केल 10, 20, 30, 40, 50 का ही लो, whatever the data, then the question will become very easy. You don't have to think much कि one line क्या represent कर रही है. Okay, that is also, that method is also easy, but in 7th standard you are just learning how to draw, so it is best to choose the easier scale which is 10. So I have taken 10 only, you also take 10, that will be best. So अमृतसर का था 37 डिग्री सेल्सियस टू 26 डिग्री सेल्सियस, तो सारे प्लॉट कर दिए. ओके, तो ये बन गया हमारा डबल बार ग्राफ. नाउ देयर आर 4 पार्ट्स ऑफ दिस रिलेटेड टू दिस ओनली, हमें बताना है क्वेश्चन. तो लेट्स डिस्कस.
Which city has the largest difference in the minimum and maximum temperature on the given date? कौन सी ऐसी सिटी है जिसके मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर में सबसे ज्यादा डिफरेंस है? तो इसके लिए तो आपको ओरली सारे को माइनस करना पड़ेगा, फिर आपको देखना पड़ेगा कि कैसे आता है, और थोड़ा सा एक्ट स्मार्ट करो और ये देखो कि यहाँ पे मैक्सिमम है 41 और यहाँ पे है 26। तो जिन जिन पे डाउट हो रहा है उनको माइनस करके देख लो, तो यू विल कम टू नो कि जम्मू हैज द लार्जेस्ट डिफरेंस, that is 15 degrees Celsius. Okay. Second is which is the hottest city and which is the coldest city. टेम्परेचर में जितना ज्यादा टेम्परेचर हो उतनी गर्मी होती है और जितना कम टेम्परेचर हो उतना मौसम अच्छा होता है, सर्दी सर्दी होती है, राइट? तो हॉटेस्ट सिटी इज जम्मू with 41 degrees Celsius temperature and the coldest city is Bengaluru. ओके, कोल्डेस्ट सिटी है बेंगलुरु जिसका टेम्परेचर है 21 डिग्री सेल्सियस, सबसे कम वही है, तो बेंगलुरु इज द कोल्डेस्ट वन इन दिस टेबल अकॉर्डिंग टू दिस डेट 20th June 2006. Third is name two cities where maximum temperature of one was less than the minimum temperature of the other. हमें दो ऐसी सिटीज बतानी है जो है जिनका टेम्परेचर तो मैक्सिमम दिया है, फिर भी कुछ ऐसी सिटीज से जिनका मिनिमम टेम्परेचर से लेस है उनके मिनिमम टेम्परेचर से भी है, तो उनका वो मैक्सिमम टेम्परेचर, पर कुछ ऐसी की सिटीज हैं जिनका मिनिमम टेम्परेचर भी उनके मैक्सिमम टेम्परेचर से ज्यादा है। थोड़ा कंफ्यूजिंग है, बट लेट्स सी द डेटा एंड देन चेक। जैसे देखो बेंगलुरु का मैक्सिमम टेम्परेचर है 28, ओके, और अहमदाबाद बेंगलुरु में मैक्सिमम टेम्परेचर 28 था, और अगर हम अहमदाबाद को देखें तो उसका मिनिमम टेम्परेचर ही 29 है। मतलब जो एक सिटी का मैक्सिमम टेम्परेचर है वो किसी और सिटी का मिनिमम से भी कम है ना? तो दैट मीन्स अहमदाबाद और बेंगलुरु, क्योंकि इसका जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो अहमदाबाद के मिनिमम टेम्परेचर से भी कम है। ओके, नेक्स्ट बेंगलुरु और जयपुर का देखो, इसका भी 29 था, जयपुर का भी 29 है। अब देखो बेंगलुरु का 28 है और इसका 29 है, तो बेंगलुरु का टेम्परेचर जयपुर के टेम्परेचर से भी कम है। ओके, सो द टू सिटीज आर बेंगलुरु एंड बेंगलुरु एंड अहमदाबाद एंड बेंगलुरु एंड जयपुर। क्वेश्चन समझ लगा? है तो वो किसी सिटी का मैक्सिमम टेम्परेचर है, पर कोई ऐसी सिटीज भी हैं जिनमें मिनिमम टेम्परेचर जो है वो भी उससे ज्यादा है। ओके, चलो, नेम द सिटी विच हैज द लीस्ट डिफरेंस बिटवीन इट्स मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर। कोई ऐसी सिटी बतानी है जिसका सबसे लीस्ट है डिफरेंस, मैक्सिमम और मिनिमम में कोई खास फर्क नहीं है, ऑलमोस्ट सेम ही है, थोड़ा सा ही है, सबसे मिनिमम डिफरेंस है उसमें, तो दैट सिटी इज मुंबई, क्योंकि मैक्सिमम है 32 और मिनिमम है 27, दैट इज 5 डिग्री सेल्सियस। ओके, सो दैट वाज ऑल अबाउट एक्सरसाइज 3.3, all the questions explained. All right, so hope you have understood. Keep on learning, keep on enjoying, keep on studying, and don't forget to click on the subscribe button. Do like and share. Bye.